So, welcome, Dr. Ramanand. Thank you so much for taking the time out. I know you're a very busy person, so we really appreciate you being here on the AI for India podcast. For our audience, for those of you who may not know, Dr. Ramanand is a public policy expert and founder director of the Center for Policy Research and Governance. Just concluded a lovely event called Padhai, which we'll get into as well during this conversation. He is also the founder of the Future of Society Lab, which works to understand the impact of AI on society. He is the founder director of the Center of Indo-European Cooperation. Now, Dr. Ramanand has been in this space of policy design and consultation for over a decade now, and he has served as an advisor to the Union Ministry of Education while they were formulating a very important policy and a much lauded one as well, the National Education Policy 2020, which we'll be touching upon as well in today's conversation. And currently, he also advises a number of higher educational institutions in India. So, welcome, Dr. Ramanand. Thank you so much for taking the time out. We won't waste too much of your time, so we'll get right into it. It would be lovely for all our audience and members to understand, what is it that the Center for Policy and Governance CPRG does, and what was your vision behind it? Thank you, Karamji, inviting me for this, podcast. Great initiative by you and Team Athya. Basically, Center of Policy Research and Governance is a public policy tank recognized by Indian Council of Social Science Research. It in 2016, जब मैं initially TIS से बाहर आया था, and I was working with the Ministry of Education as a and assisting them on National Education Policy 2020. And we thought there should be a platform where youngster professionals can come and can easily, think on some of ideas, policy ideas, और वो जो ideas पे वो सोचे उस पे खुद भी काम कर सके. So Center of Policy Research and Governance, it's not a just institute, it's an idea, it's a platform where we do not follow any kind of hierarchy. We usually respect to the ideas and to the उस ideas को कैसे हम public में लेकर के जाएं. Under CPRG, we have initiated many things. As you already mentioned, we have initiated the Future of Society initiative. We have also initiated one, very interesting project to track the Parliamentary Standing Committee report. We have one center which, basically understand and study the civilizational things. Under that, that project and that initiative, we usually understand and the kind of, social knowledge and, social knowledge aspects. We have also, some kind of a project which basically focus on the Indian knowledge systems. We also offer some research grant for the in the field of social science research. We also, we have a separate vertical on the academy. Under academy vertical, we offer 2 or 3 course in online mode, sustainable policy, and some course on impact consulting. So it's a under CPRG we just try to understand and cover the 360 degree of policy cycle, policy life cycle. So हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सजेशन देने से लेकर के जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी जाती है उस पर सजेशन देना, उसके ड्राफ्ट पर देन जब पॉलिसी आती है तो उसके बारे में हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, लोगों को बताते भी किस पॉलिसी के क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. देन जब पॉलिसी आ जाती है और इम्प्लीमेंट होने लगती है, देन वी आल्सो डू सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट. So एक तरीके से हम 360 degree follow करते हैं. A lovely initiative that you've taken upon yourself, sir. I think covering the whole life cycle is so important in policy making today, because until you think about it, the whole life of the policy, you can't really formulate it in a way where you're thinking about the impact. So another thing that I found very interesting was that you mentioned that you have a lot of training courses as well that you guys offer at CPRG. I think that is a good segue for me to start talking about education.
And as I alluded to earlier, you guys recently concluded the Padai event, which so so many lovely and exciting and knowledgeable people from academia, government, and the tech space come together to discuss the intersection of artificial intelligence and education. So first of all, I wanted to ask you, what was the thought behind the event and how was the name, which I found quite, catchy, Padai. How did that come to be? Padhai is the part of our Future of Society initiative. So under Future of Society initiative, we are just trying to understand and the society and technology. So पढ़ाई में दो एलिमेंट है, एक पढ़ मतलब इससे काइंड ऑफ एक एजुकेशनल जो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशनल लर्निंग का जो पार्ट है, दैट इज द पढ़ में आता है, and how technology is going to shape and to engage with that social institution. So दोनों का एक मिक्स है. So पढ़ एआई जो साउंड करता है पढ़ाई, बट पढ़ाई है, बट वो पढ़ाई क्या एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद वैसे ही रह जाएगी कि या उसमें कुछ चेंज होगा. हमारा जो एक आइडिया था कि इसको समझने का था. जैसा मैंने कहा कि इट्स अ प्लेटफॉर्म और हम बहुत सारे लोगों को यू नो इंगेज करते हैं और उनको आई विल नॉट से कि उनको हम चांस देते हैं, वो हमें खुद चांस देते हैं, बिकॉज इट्स ए प्लेटफॉर्म टू बी ऑल आवर को लर्नर को ट्रेवलर. हम एक दूसरे से सीखते हैं. ऐसा नहीं है कि सीपीआर जिनको कुछ सिखाता है या मैं कुछ सिखा सकता हूँ. एज ए इंडिविजुअल मैं काफी कुछ अपने जो साथ के लोग हैं उनके साथ सीखता हूँ. तो ऐसे ही एक जो हमारे टीम मेंबर हैं, इज वेरी टैलेंटेड टीम मेंबर, उनका ये आइडिया था कि सर इसको पढ़ एंड एआई दोनों को हम ऐड करेंगे एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. और तो ऐसे आया. और पढ़ाई हमने कॉन्क्लेव कैसे सोचा, तो पढ़ाई कॉन्क्लेव सोचने का एक बेसिक आइडिया था. वी हैव डन सम सर्वे एंड वी हैव डन दैट सर्वे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सम ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन to understand how academician, students, and other stakeholders are adopting AI in their day-to-day life. So if students are adopting AI, उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है. इफ अ फैकल्टी मेंबर इज अडॉप्टिंग एआई, उनका क्या एक्सपीरियंस है. टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव डन अ सर्वे. जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई, हमने सोचा कि उस सर्वे की रिपोर्ट पर अब हमें डिस्कस करने के लिए सभी तरह के स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करना चाहिए. सो एज यू ऑलरेडी मेंशन कि हमने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके हेड को बुलाया, पॉलिसी मेकर्स को बुलाया, एंड जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया. साथ में हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स को बुलाया टू इनिशिएट अ डायलॉग बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स कि एआई जो एक न्यू फेनोमेना है, जो इमर्जिंग फेनोमेना है, वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है जो एजुकेशन सेक्टर जो हमारी सोसाइटी में आ रहा है, वो एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. Lovely, sir. And I think that's such an important conversation. Even today, you and I were talking before this about another event that was happening. The only question asked by a young person was this: how today I'm going to start join the workforce in a couple of years. क्या मेरी पढ़ाई will that be relevant in the age of AI? So do you feel that today, and based on your survey and also your discussions with so many stakeholders, do you believe that enough is being done in India to upskill the youth, to adapt to the age of AI? जी, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चन एंड योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एआई, क्योंकि आप उस इश्यू को समझ रहे हैं, इसलिए आपका ये प्रश्न वहां से आया. और ये दिखाता है कि आप कितने इंटेंटिवली इससे एंगेज कर रहे हैं. आई विल से as it's not about India, it's about the world. You know, no institution can say that they are prepared enough to face the challenges of AI or other emerging technology. Either it's a institution based in West or East, Asia, Europe, or other जो US based institution है. कोई नहीं कह सकता है कि now they have made enough preparation, now they are fully ready to adopt AI. सारे इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने चैलेंजेज हैं, and undoubtedly AI is going to change the existing landscape, existing dynamics of the education system.
आइदर इट इज इंडिया बेस्ड एजुकेशन सिस्टम और इंडिया और जो यूएस बेस्ड में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हर लोग कुछ ना कुछ इससे चैलेंज फेस करने वाले हैं। अब हम कर क्या सकते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए कम्युनिटी, हमारा रोल क्या है? पहला रोल तो ये है कि वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, कि एआई के जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको उनको फेस करने के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए एज ए कम्युनिटी लेवल पे हमें प्रिपेयरनेस स्टार्ट करनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि कम्युनिटी लेवल पर प्रिपेयरनेस, तो यूजुअली क्या है कि इन इंडिया हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज हो वो गवर्नमेंट करे। तो गवर्नमेंट लेवल की प्रिपरेशन इज नॉट एनफ। वी नीड मेक आवर सेल्फ प्रिपेयर, और उसके लिए सोसाइटल प्रिपेयरनेस भी जरूरत है, और इंडस्ट्री को भी साथ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, वर्कफोर्स, वर्कफोर्स सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्रिपेयर कर पाएगी। अगर इंडस्ट्री को एडवांस स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो उनको भी इन्वेस्ट करना होगा। हम बाहर के इंस्टीट्यूशन में देखते हैं कि इंडस्ट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है वर्कफोर्स को प्रिपेयर करने में। बट इंडिया यूजुअली जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेक्टेशन होता है कि इंस्टीट्यूशन उसको प्रिपेयर करे, गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करे, एंड जो आउटकम आए उसको इंडस्ट्री अडॉप्ट कर ले। ये जो पिक्चर है वो चेंज होने वाली है। अगर इंडस्ट्री ने प्रोएक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो वर्कफोर्स का इशू बहुत बड़ा आएगा। दे विल नॉट गेट वो वर्कफोर्स जो इंडस्ट्री में काम कर सके। सेकेंड थिंग, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसका क्या होगा? तो यहाँ पर फिर इंडस्ट्री का रोल है। अनडाउटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी रोल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐसे कोर्स ऑफर करने होंगे, आइदर इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, एनी काइंड ऑफ एनी मोड, where existing workforce can come and can adopt certain technology, can up अपने आप को अप स्किल कर सकें, रीस्किल कर सकें। बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को अपने वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करके, उनको मैप करके टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको अप स्किलिंग के लिए जोड़ना पड़ेगा। अपने यहाँ एक इंटरनल कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पर उनको ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये वर्कफोर्स का ये वाले पार्ट को इस स्किल्स की जरूरत है, एंड लेट देम अप स्किल देम और रीस्किल देम। ये करना पड़ेगा इंडस्ट्री को। ये जो इंडस्ट्री की एक नॉर्मल एक बहुत ही एक रिजिड स्ट्रक्चर है कि ये वर्कफोर्स को करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री ने प्रोएक्टिवली इसमें रोल नहीं प्ले किया, आइदर इट्स इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एक केओटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। मैं लास्ट वीक एनडीटीवी के एक कन्वर्सेशन में था जिसमें उन लोगों ने कहा कि इतने लोगों को निकाल दिया गया वर्कफोर्स ने, व्हाट विल हैपन, इट विल, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो वी शुड नॉट बाई दीज थिंग्स। हमें सोचना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट क्या वो सिर्फ सरकार के लिए गलत नंबर है, खराब नंबर है? इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही इक्वली खराब नंबर है अगर वर्कफोर्स इंडस्ट्री के बाहर जा रही है। इट विल क्रिएट केओटिक। लोगों की जो बाइंग परचेजिंग पावर है वो भी कम होगी ना। अगर इंडस्ट्री से लोग बाहर जाएंगे, चाहे इससे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो, अगर वर्कफोर्स बाहर जाएगी इंडस्ट्री के तो उसकी परचेजिंग पावर भी कम होगी सोसाइटी की। सो इंडस्ट्री हैज टू इन्वेस्ट प्रोएक्टिवली इन द अप स्किलिंग दियर वर्कफोर्स। दैट इज द वन ऑफ द थिंग जिस पर मुझे हाईलाइट करना है। अनडाउटली यूनिवर्सिटी का करेक्टर चेंज होगा। यूनिवर्सिटी में जो हम लोग सोचते थे कि हम ग्रेजुएशन करके निकल जाएंगे एंड वी आर नाउ वी हैव डन एनफ टू टू एडजस्ट इन द इंडस्ट्री, टू survive in the industry, that is not enough. We have to come again with to the our education institution. We have to reskill, upskill, then ये अब चलता रहेगा। It will be now two-way process. I think that you made a very interesting point, sir. When you speak about it's in the benefit of industry to kind of upskill people, because at the end of the day, the people working in industries are the ultimate customers, and without that, businesses kya kamaenge if no one has any money to buy anything. So I think that's a very good point, and I hope that we obviously work with so many at AF India. There's so many companies involved, and I'm sure they're all doing their part in upskilling their workforces. But I think it's a very good point, and I hope all of them take it to heart as well. But when we talk about education, there's another side to this, of course. There's one where we're worried about the future workforce, but there's also a very positive side to what AI can do in terms of democratizing education.
and helping, it reach more people and things of that sort. So, having worked on national education policy, would you say that our policies are primed in a way that allow for the adoption of technology quite easily? Can we integrate technology in our education system quite easily in India? NEP 2020, no doubt, that kind of space where we can adopt emerging technology, not only AI, but other emerging technology. We can incorporate those technologies in our, curriculum. We can also train them with the new technology, not only in the university system, but in our school system also. Ninth onwards, NAP 2020 लोगों को allow करती है कि they can do some kind of internship, they can opt certain skills. So these are the flexibility options जो है NAP 2020 लोगों को engage करती है. At university level also, NAP 2020 स्किल्स बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज को के लिए रास्ता निकालती है कि कहाँ पर वो नई टेक्नोलॉजीज और नए स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. साथ में वो बहुत कम टाइम के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर में रहना चाहते हैं, एंड इफ दे विल कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सिस्टम आफ्टर सर्टेन पीरियड, दे विल गेट सम सर्टेन डिग्री, सर्टेन सर्टिफिकेट, इवन अगर उन्होंने 1 साल भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्पेंड किया है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटरी जो चीजें हैं वो एनईपी 2020 ने किया है. और एनईपी 2020 जब बन रही थी तब ये टेक्नोलॉजी का जो डिबेट था, ये डिस्कशन था, अनडाउटली स्टार्ट हो गया था. हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो एनईपी 2020 को एक फ्यूचर डॉक्यूमेंट के रूप में देख रहे थे, और वैसा डॉक्यूमेंट निकल करके आया. नाउ इट्स अप टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, बिल्कुल स्प्रिट में कर रही है, बट नाउ इट्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट, जिसका बहुत की रोल होगा. एंड जब भी मैं एनईपी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, तो माई ओनली फोकस इज स्टेट गवर्नमेंट. We usually, whenever we talk or we discuss about the education system, education policy, we always think or imagine about the central government, the role of central government in the implementation of that policy. But it's a state government which intervention is matter in the education sector. State government is play very crucial role, very important role in the implementation of any education policy and program. And that's why we have to discuss and pursue the state government, so they can train their future workforce for the for the future challenges. और ये जो वर्कफोर्स है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जाएगी. Whatever we will teach our students today, they will come out from our education system after 12 to 15 years. So हमें वो चीज इमेजिन करनी होगी. यूजुअली एजुकेशन एक बहुत ही ट्रिकी स्पेस इसलिए होता है कि whatever we usually do today, it will not yield any result tomorrow. The outcome of the education, the investment in education sector usually visible after 12 to 15 years. So that's why it's ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत ही पेशेंस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बट इन आल्सो टर्म्स ऑफ other human resource. Very true. I think that's such a good point that, the outcomes of education take so long to actually be visible. So I think that's a very good point that you made. We've spoken a lot about, education and, AI. One thing I wanted to discuss with you, you've of course been working very closely with AI for India for a while now. You and your organization have contributed significantly to AI for India's Data Dan initiative. You guys released the white paper that kind of outlined a lot of the, mission and vision for the program, for the campaign. So I just wanted to see if you could say a few words on the Data Dan campaign, its significance, and why people should support it. So Data Dan project is very important for both of the organization, Center of Policy Research and Governance, and for the AI4INDIA. Me, Sasi sir, Alok sir, Pranav, all were working on this issue. और ऐसा इशू था कि जो काफी क्लोज था, and we usually discuss about this project, how important this project
because before this project we don't have any kind of working paper or any kind of policy document. What should what kind of policy or what kind of guideline India should follow. I usually jokingly मैं कई बार बोलता हूँ, and I have mentioned in the AI Action Summit Paris, जिसमें हमें इनवाइट किया गया था एज ए मेंबर, तो मैं वहां पर भी लोगों को ये बात मैंने मेंशन किया, इन इंडिया taking data is not a legal, sorry, it's not illegal, but it is not legal also. So whatever data multinational companies taking from the individuals, they can say they are not doing it illegally, but at the same time they are not doing it legally also, because we do not have that kind of mechanism. हम उसको अलग अलग कुछ पॉलिसी और ड्राफ्ट से कर रहे हैं. वी आर नॉट डीलिंग डायरेक्टली दैट थिंग, क्योंकि हमारे जो ड्राफ्ट आ रहे हैं वो लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं. सो अगर मान लिया आज ही ये जो डेटा हम जिस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू वांट टू शेयर दीज थिंग्स, तो वो कोई यूएस के लॉ से गवर्न हो रहा, बिकॉज अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां रजिस्टर्ड होगा वहां के रूल से ये गवर्न हो रहा होगा. इंडिया का क्या सिस्टम है, इंडिया डेटा को लेकर के क्या मैकेनिज्म है, वो भी हम तक बात नहीं कर पा रहे हैं. एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू वॉलंटियर सम काइंड ऑफ डेटा सेट कि ये डेटा सेट मैं हमको देना चाह रहा हूँ, तो कैसे दे सकते हो? यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म. सो डेटा डन, इट्स बेसिकली इट्स अ गुड आइडिया कि डेटा लेना जितना इम्पोर्टेंट है, वैसा ही किसी डेटा को वॉलंटियर करने के लिए, देने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या रोड मतलब क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उस गाइडलाइन के बारे में हमने डिस्कस किया है. एंड आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. हमने इस पर तो काफी डिस्कस किया. एंड आई विल मैं सिर्फ अर्ज कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर जो नो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या कंसर्न डिवीजन है, दे शुड टेक दैट इनिशिएटिव की. हमारी इस इनिशिएटिव को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट फॉर CPRG AI फॉर इंडिया, बट इट्स फॉर द इंडिया, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट की बात है. I think that's very well put, sir. To anyone who's watching, if you want to know more about the initiative, you can visit AI4INDIA's website. It's a very important initiative. I think everyone here at AI4INDIA and at CPRG feels very strongly about it, and we hope you all support it. And I think that's a lovely note to end this conversation on. Thank you so much, Dr. Ramanand. It's been such a pleasure to speak with you, and I look forward to many more conversations with you. Thank you, Karamji. It was a lovely conversation, and I have really enjoyed this conversation. Thank you.